दोस्त है हमारे। How many of you have close relation or friend or any people you know with disability? And do you know the struggle of that people? Do you know the struggle of that people? कितना struggle करते हैं? जी सर जी। So today's editorial is like this itself. ठीक है? कि the great ये opinion है. Editorial तो मैं अपने hand written notes आपको भिजा दिया. ये editorial पूरा important है. आपको आपका syllabus copy है आपके हाथ में? Do you have the syllabus copy with you? This editorial deals with the general studies and mental ability का preliminary test का point number 12. Social exclusion, rights issues on gender, caste, tribe, disability, etc. and inclusive policies में आता है. ठीक है? ये मैं नोट्स भी बना के आपको भिजा देता हूँ उसका रिवाइज आज का एडिटोरियल एनालिसिस में. इसका टाइम नहीं मिला मेरे को, so we'll read it. Okay? So can someone start reading the heading, please? Can start reading the heading. The great omission in the draft disability policy. The great omission. The great omission. Omission माने? What means omission? Omission means what? Right? What is omission? Simple. What is omission? Where there are 8 people in the class, I do not want any silence, please. If you do not know, please say, sir, nahi malum. खामोश बैठे तो it is not a what you can say. सर अजान हो रही है इसलिए आंसर है. The great omission in the draft disability policy. ठीक है, उसके बाद पढ़िए. Omission माने include नहीं करना, not including. Non-inclusion is omission. ठीक है, उसके बाद पढ़िए. Unless there is a political inclusion of the disabled, the goal of inclusiveness and empowerment will remain elusive. Will remain elusiveness. The goal of elusiveness and empowerment. The goal of inclusiveness and empowerment will remain elusive. माने अब मिलता, जब मिलता, अब मिलता, जब मिलता में ही रह जाते हो. ठीक है? So the great omission of the draft disability policy. ये आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज नोट इट डाउन. थोड़े पॉइंट्स है जो आपको नोट करना है. ठीक है? You are having your notes, right? Yes, sir. You are making your notes. I hope everyone is making the notes. Okay, please start reading. And please, before that, please see the symbol. Symbol क्या है? Symbol कैसा है? What is symbol? What is the symbol? क्या दिखा रहा symbol? क्या क्या दिख रहा आपको? Symbol is very important. Sometimes symbol दे के पूछ लेता है किसका symbol है बोल. So everything which is given in the Hindu, it is important. ठीक है? Man, happy man and hand symbol. Yes. Happy man and hand symbol. Symbol. ठीक है? So let us start. Please start reading. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, DOEPWD, recently released the draft of the National Policy for Persons with Disabilities Policy. What? Public comments have been invited till July 15, 2022. आज क्या तारीख है? 15. July. July 15. तो आज तक टाइम था कि भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो भी पॉलिसी आती है ना, तो गवर्नमेंट ऑलवेज इश्यूज अ ड्राफ्ट पॉलिसी फर्स्ट एंड आस्क फॉर द व्हाट यू कैन से आस्क फॉर द कमेंट्स बाय द जनरल पब्लिक. ठीक है? नेक्स्ट प्लीज. The necessity for a new policy which replaces the
2006 policy was felt because of multiple factors such as India's signing of the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. तो प्लीज नोट, प्लीज ये नोट कर Enactment लीजिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इंडिया हैज साइन दिस, अभी तक साइन नहीं करे थे, तो इंडिया हैज साइन दिस। सो इस वजह से क्या हो रहा, 2006 की पॉलिसी को अब चेंज कर रहे, ठीक है। नई पॉलिसी का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। नई पॉलिसी का नाम क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये 2006 में पहले पॉलिसी आई थी। हाउ मेनी इयर्स दे आर चेंजिंग? कितने साल के बाद चेंज कर रहे? कितने साल के बाद चेंज कर रहे? अराउंड 2006 में तो 22 में से 6 निकाल लो, कितना होता? 22 में से 6 निकाल दो, 16। After almost 16 years, the policy is being renewed now. ठीक है, next please. Please read. Please continue. Enactment of a new disability legislation, Rights of Persons with Disabilities Act 2016, which increased the number of disabilities from 7 conditions to 21, and being a party to the Indian strategy for Asian and Pacific decade of persons with disabilities 2013 to 2022. जी, Indian commitment. जी, इंचियन कमिट, ये नोट कर लीजिए। पढ़ना सर। फिर से पढ़िए, प्लीज रीड वंस मोर। वहां से ही पढ़ना सर। Enactment of a new disability legislation, Rights of Persons with Disabilities Act 2016, which increased the number of disabilities from 7 conditions to 21, and being a party to the Indian strategy for Asian and Pacific decade of persons with disabilities 2013 to 2022. Indian commitment. इंचियन कमिटमेंट्स, ये तो आपको एग्जाम में आ रहा है कैसा भी। इंचियन कमिटमेंट्स क्या है? रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू हेल्थ। जी, इंचियन बोले तो क्या है वो वर्ड? इंचियन वो जगह का नाम है, इंचियन वो जगह है। और क्या बोलते उधर, क्या बोलते, इट वाज अ मीटिंग नेम, नेम ऑफ द मीटिंग, ठीक है। आगे आ रहा हूं, जस्ट वेट। सो इनैक्टमेंट ऑफ ए न्यू डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन, न्यू डिसेबिलिटी लेजिस्लेशन, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये एक्ट का नाम है। जो नया एक्ट आ रहा इसका नाम है ये, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज। पहले कितने थे? 7। पहले 7 थे, कितने हो गए? 21। 21, ठीक है। 7 थे, 21 हो गए। उसके बाद इंडियन स्ट्रेटेजी फॉर एशिया एंड पैसिफिक डेकेड ऑफ पर्सन। तो डेकेड माने कितना? 10 साल। तो प्लीज रिमेंबर, इंडियन पॉलिसी फॉर डेकेड पर्सन का कौन से साल से कौन से साल तक है? 2013 to 2022। 2013 से 2022 तक, ठीक है। उसके बाद पढ़िए। The last was prepared under the aegis माने गाइडेंस, एजिस माने गाइडेंस of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UNESCAP, which identifies 10 goals for Asia Pacific countries to ensure the inclusion and the empowerment of persons with disabilities and conformity with the Sustainable Development Goals 2030. The Sustainable Development Goals 2030। तो सस्टेन कितने इसको याद है? कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कितने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? उर्दू में Anyone remember?
मेरी लास्ट क्लास में उर्दू मुस्कान में आई हैव गिवन यू दिस 17 गोल्स. Yes, Right, sir. sir. सस्टेनेबल मोहम्मद इमरान भाई. डेवलपमेंट गोल्स जी क्या हाँ क्या सर. है? व्हाट आर दोस गोल्स? याद है? कुछ भूल गए? याद है सर, मतलब आप पढ़ाए सो याद है, वो क्या है याद नहीं. 17 गोल्स याद है. 17 गोल्स है उसमें पूरे. ठीक है. So we'll नेचर का भी था, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, वो so there are 17. Poverty. There Yes, are sir. No poverty. there are 17 goals. पहला क्या था? फर्स्ट वन क्या है? सेकंड वन क्या है? No poverty. नो पॉवर्टी. उसके Zero बाद hunger. हंगर आता, Zero पॉवर्टी hunger. आता. सबसे पहले हंगर आता, पॉवर्टी आता. पहले पॉवर्टी. poverty. पॉवर्टी है सर फर्स्ट. पक्का? हाँ सर, देख के बोलो. Yes. उसके बाद No poverty. जीरो हंगर. Zero hunger. हंगर. उसके बाद गुड हेल्थ एंड Good वेलबीइंग. health and well-being. उसके बाद Next, quality education. क्वालिटी एजुकेशन. उसके बाद Gender Gender equality. जेंडर इक्वालिटी और Clean water and sanitization. सैनिटेशन. Sanitation. आप लोग का मीनिंग Yes. बदल जाते हैं. आप लोग इतना खतरनाक चेंज कर दिए. तो सैनिटाइजेशन अलग है, सैनिटेशन अलग है. Yes, sir, sanitation. उसके बाद Affordable and clean energy. अफोर्डेबल And clean energy. एंड क्लीन एनर्जी और Decent work and And economic growth. डिसेंट वर्क है, इकोनॉमिक. ओके, ठीक है. सो व्हाट आर यू सीइंग ऑन द स्क्रीन? अनसस्टेनेबल With symbols, they are डेवलपमेंट गोल्स. showing the यूनेस्को का है, यूनेस्को फ्लैग. यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. आप लोग अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाते हैं तो इसका मीनिंग खत्म हो गई. दैट इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओवरव्यू है, 2 मिनट का वीडियो है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ ऑल. मैं म्यूट कर देता हूँ. पहले पूरा म्यूट कर लो, देन लिसन टू इट केयरफुली. ठीक है. आवाज आ रही? Sustainable development. प्लीज वॉच दिस. Did you know that the UN Sustainable Development Goals are a universal call to action that unites 193 countries around the world? If these global goals are fulfilled by 2030, life on Earth will be better for everyone. So, what are these goals? Eliminate poverty in all its forms. No hunger. Everyone should have safe, nutritious, and sufficient food. Everyone has equal access to healthcare, thus ensuring our well-being and a healthy life. Equal access to a quality education. Ensure gender equality where women and girls have the same opportunities as men and boys. By achieving these goals, each member of our society will be equal, safe, and happy. UN global goals also include access to safe drinking water and sanitation, access to clean energy that is safe for people and the environment, sustainable and stable economic growth. Everyone has a decent job, strong infrastructure, and the support of innovations. Lower inequality within and among countries. Cities and settlements be developed without damaging the environment and people. Achieving these goals will result in the well-being of people and our planet. We can further take care of our environment with the following goals: sustainable and safe production and consumption of products. Take urgent measures to reduce climate change and its impact.
ensure the sustainable use and protection of ocean and sea resources, restore and protect Earth's ecosystems. By achieving these goals, we will form a society where strong institutions ensure peace and justice. It is important for everyone to be involved and to build partnerships for achieving sustainable development goals. You are part of this process. Demand the implementation of these goals. Take the lead and share information with your friends. So what is UNICEF? UNICEF क्या है? Hello? Unmute yourself. What is UNICEF? UNICEF का टैगलाइन क्या है? पूछ ले सकता हूँ कुछ भी? For every children, for every child. UNICEF for every child. So there are 17 sustainable goals which you have to remember. By heart कर लो. Question उसमें से आता ही आता. ठीक है? Next please. Please read next. Please continue. Anyone else? Zara, please start. Okay. These commitments have changed the discourse around disability by shifting the focus from the individual to society, therefore, from a medical model of disability to a social or human rights model of disability. Now, what it is telling the Incheon commitments. Incheon commitments माने जो उधर जगह है, ठीक है? Incheon commitments have changed the discourse. पहले कैसा देखते थे? अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो कैसा देखते थे? मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे. लेकिन अब कैसा देख रहे? सोशल एंड ह्यूमन राइट्स मॉडल की तरफ से. ठीक है, मेडिकल तो है लेकिन दे आर आल्सो फर्स्ट ह्यूमन, फिर उसके बाद में डिसेबिलिटी आई. ठीक है, समझ में आ रहा? फ्रॉम इंडिविजुअल मॉडल टू फ्रॉम इंडिविजुअल टू सोसाइटी मॉडल. ठीक है, प्लीज रीड. Or human rights model. ह्यूमन राइट्स मॉडल, प्लीज रीड नेक्स्ट. Okay. The principle of the draft policy is to showcase the government's commitment to the inclusion and empowerment of persons with disabilities by providing a mechanism that ensures their full participation in society. In furtherance of this commitment, the policy document highlights a detailed commitment to education, health, skill development, and empowerment, sports, and सही है सर. नीचे करना पड़ता स्क्रीन को. एक मिनट. स्टक मेरे पास. उसके बाद पढ़िए. दिस इज इम्पोर्टेंट. इन फर्दरेंस Sports and culture society इधर से पढ़िए. security culture. Okay. In furtherance of this commitment, the policy document highlights a detailed commitment to education, health, skill development, and employment, sports and culture, social security, accessibility, and other institutional mechanisms. However, a glaring omission is the absence of any commitment to the political uplift of persons with disabilities. I think we should. Where is Incheon? Incheon किधर है? कौन से कंट्री में है? पूछ ले सकता हूँ आप. South Korea. South Korea. It is in South Korea. South Korea. So let us take a look at the Incheon city. ठीक है? Are you able to see the screen?
Yes, No, sir. देख सक रहे लेकिन वो पुरानी छाप चेंज करे क्या? No. Are you able to see the screen here? Yes. Yes, sir. This is the इंचियोन, जो अपन बात कर रहे हैं इंचियोन कमिटमेंट्स, साउथ कोरिया की सिटी है ये, ठीक है। सो आपको सिटी के बारे में मालूम रहना, तो इट इज अ 5 मिनट वीडियो, प्लीज सी, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। यहाँ पर अच्छा है, like इन फर्दरेंस, in furtherance of this commitment, the policy document highlights a detailed commitment to education, health, skill development, and employment, sports and cultural, social security, accessibility, and other institutional mechanisms. इंस्टीट्यूशनल However, मैकेनिज्म, देखिए, adhering बिकॉज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये डॉक्यूमेंट क्या बताता, ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि जो भी डिसेबल लोग हैं उन लोगों को भी कमिटमेंट मिलना, कि उन लोगों को भी एजुकेशन मिलना, उन लोगों को भी हेल्थ मिलना, उन लोगों को भी स्किल डेवलपमेंट मिलना, उन लोगों को भी स्किल डेवलपमेंट मिलना, उन लोगों को भी स्पोर्ट्स एंड कल्चर मिलना, उन लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, उन लोगों को फैसिलिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू करिए। However, a glaring omission in the absence of any commitment to the political uplift of persons with disabilities. तो लेकिन About political, लेकिन लेकिन ये जो एक्ट लाए अपने पास, ये पूरे पूरे इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। सो इसका याद रखिए, प्लीज रीड next समवन you can एल्स, continue. नो समवन एल्स प्लीज। सबको रोटेशन पॉलिसी, अमानुल्लाह, शरीफ, अल्ताफ है इधर, और पूजा। सब अल्ताफ, सो पूजा है, इफ यू आर देयर प्लीज स्टार्ट रीडिंग। shall I read, sir? ओके, चलो स्टार्ट Yes, रीडिंग। sir. ओके ओके, लेट लेट स्टार्ट, कोई भी स्टार्ट करो, देन विल गो फॉर someone else can read for next About paragraph. political participation. About Article 29 of the about political participation. political, Political participation. Article 29 of the Convention on Rights of the Person with Disabilities mandates, mandates that state parties should ensure that person with disability can effectively and full participate in and political and public life on an equal basis with others, directly or through freely choose representative the chosen representatives। माने देखिए, फॉर एग्जाम्पल आज का पार्लियामेंट है अपना, टुडे वी हैव पार्लियामेंट एंड टुडे वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, और अपने पास SC ST और OBC रिजर्वेशंस है, SC ST रिजर्वेशंस है, MP SC ST के आ सकते हैं रिजर्वेशन के बेस पे। तो सिमिलरली आज की जरूरत क्या है, अपने पार्लियामेंट में 1, 2 या 3 सीटा रिजर्व रहना पड़ता फॉर द पीपल ऑफ डिसेबिलिटी। जब तक आप रिजर्व नहीं करे, लोगों के साथ जस्टिस आप नहीं कर सकते, ठीक है। पॉलिटिकल और पब्लिक लाइफ में विदाउट बीइंग रिजर्वेशन जब तक नहीं आया, दिस कम्युनिटी, द डिसेबल्ड पीपल, द चैलेंज पीपल कम्युनिटी कैन नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। प्लीज रीड नेक्स्ट। सर इंडिया में कुछ है क्या ऐसा रिजर्वेशन? नहीं है, इंडिया में रिजर्वेशन नहीं है। दैट इज द मोस्ट व्हाट यू कैन से, इट इज अ सरप्राइजिंग कि भाई इवन इन द पॉलिटिकल डिबेट में भी नहीं है ये चीजें कुछ भी।
Now after 75 years we are रिजर्वेशन है ना starting to talk about them. 75 साल के बाद, 70 साल के बाद, ठीक है? So वही आ रहा next. Please read. excuse me Sir, sir, what is that word? The Incheon goals. The South Korea. Incheon goals also. Okay. South Korea में there is a city called Incheon. उधर मीटिंग Okay, हुई, sir. उसको बोलते हैं Incheon goals. Okay. The Incheon goals also promote participation in political process and in decision making. The Rights of Person with Disability Act 2016 em- embodies these principles एक मिनट within एक मिनट its. एक सबर 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 भाई, आगे नहीं पढ़ना नहीं है तो थोड़ा स्लो पढ़िए. क्यों आप फिर फास्ट? डोंट पैनिक, सुकून से पढ़ो. Yes, sir. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 embodies 2016. these principles within its fold. Embodies माने to take into, to accept. ठीक है? ये हिंदू पेपर है, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर रहता, and you are reading it, it's a big thing. ठीक है? Next please. Yes. The anti-discrimination commitment, sir. The anti-discrimination commitment under this act recognize the political domain Domain. domain wherein disabled people should be allowed to release their human rights and fundamental freedoms. The documents fail to take Cognizance. sir, Cognizance. cognizance of such cognizance. Cognizance माने उसका खबर लेना. Okay, ठीक है? sir. फिर to make उसकी खैर खैरियत पूछना, that is cognizance. Okay, sir. Please read next. Mandates political empowerment and the illusion of this Inclusion. disability are Inclusion. ensure. Okay, sir. Sir, your voice is in echo format, sir. Okay, मेरी वॉइस इको हो रही उधर, डबल आ रही. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मेरे सा को उधर. क्लियर आ रही. शायद वो वाईफाई का इशू होगा. सोनिया के पास वो इको हो रही. डबल आता. Okay, someone एक पैराग्राफ, can someone else complete it? Political empowerment and the inclusion of the disabled are an issue that has not found traction in India's democratic discussion. देखिए अपना India पास does टुडे not टुडे have- एक मिनट. टुडे आफ्टर इवन 70 years, कब मिली अपने को इंडिपेंडेंस? 1947 में. 1947 से लेके 2017 तक कितने साल हो गए? 57, 67, 77, 87, 97, 2007, 2017, कितने साल हो गए? 70 साल हो गए और 5 साल मिला लो तो कितने? 75 years के बाद we are starting to talk about this disabled people. ठीक है? तो आज स्टार्ट हो रहा डिस्कशन, और उसको जस्टिस करना बोले तो इंडिया में कम से कम एक अच्छे आइडिया को जस्टिस करना है तो 15 से 20 साल लगते. ठीक है? नेक्स्ट. India does not have any political commitment that is aimed at स्लो क्यों हो जा रहे? India does not have any political commitment that नहीं is नहीं aimed नहीं, क्या है वो वर्ड? क्या है जो दिमाग में है वो नहीं, जो पेपर पे वो पढ़िए प्लीज. political policy commitment. मीनिंग India बदल जाते does पूरे. not have any policy commitment that is aimed at enhancing the political participation of. ऑफ उसके बाद नहीं है continuation. ऑफ Of किधर है? Of persons Disabled देखिए people. स्क्रीन देखिए प्लीज. of persons disabled people
वो पढ़िए कंटिन्यूएशन नहीं है सर, इसके यहाँ पर भी कुछ था होगा। द पॉलिटिकल, एक्सक्लूजन ऑफ सुन डिसेबल्ड एक पीपल। मिनट, अब इधर रोके ना आप, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ डिसेबल्ड पीपल, ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। ऑफ डिसेबल्ड पीपल किधर था सर, मैं भूल गई लाइन किधर थी। इधर The द एक्सक्लूजन, exclusion of disabled people. The exclusion of disabled people from the political space happens at all levels of the political process in the country and in different ways. For instance, the देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनो जैनब, जैनब ही है ना। yes, The हाँ, political space happens for at all levels of the political processes in the country, कॉमा है उधर, ठीक है, थोड़ी देर रुकना है, फिर आगे बढ़िए, एंड इन डिफरेंट वेज, फुल स्टॉप, आपको पूरे को रुक जाना है, सांस रोक देना है उधर, फिर उसके बाद में नया सेंटेंस स्टार्ट करिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस, yes, थोड़ा स्पेस, फिर स्टार्ट। yes. The exclusion of disabled people from the political space happening at all levels of the political process in the country and in different ways. For instance, the inaccessibility of the voting process, barriers to participation in politics, or a lack of representation at the local, state, or national levels have all aggravated the marginalization of the disabled. एग्रेवेटेड माने सिचुएशन को और खराब बना देना, बढ़ाना और और बढ़ा खराब देना। सिचुएशन पहले से खराब है Marginalization. और खराब बना के उन लोगों को कोने में ही साइड में कर देना, ठीक है। तो प्लीज रीड समवन एल्स, ग्राउंड रियलिटीज क्या क्या है। Ground reality no data. Section 2 of the Rights of सेक्शन Persons सेक्शन with सेक्शन, Disabilities Act. एक मिनट, प्लीज रीड व्हाट इज ऑन द पेपर प्लीज। ये क्या है? Section 11, sorry. सेक्शन 2 अलग है, सेक्शन 2 डेफिनेशन से पूरे, सेक्शन 11 अलग है, मीनिंग ऑफ पूरे चेंज। प्लीज रीड। Ground realities no data. Section 11 of the Rights of Persons with Disabilities Act prescribes that the Election Commission of India and the State Commission of shall ensure that all polling stations are accessible to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are easily understandable by and accessible to them. Although this mandate has been in election day existence for few years, existence for a few years, the disabled people still report accessibility issues before and on election day. There is often a lack of accessible polling booths in many locations. There is still no widespread adaptation of braille, electronic voting machine, and even wheelchair services at all polling centers. The Election Commission of India has developed its own procedure for handling PWDs during the electoral process. what is Political PWDS? parties in India still do not find the What are disabled PWDS? as a large, yes, PWDs, What do you mean person with PWDS? disabilities, Person with? People with person with disabilities. disabilities Yes, please continue. during the electoral process. Political parties in India still do not find that disabled as a Large electorate. electorate to specifically address their needs. The lack of The lack the of lack of live aggregate data on the exact number of the disabled people in every constituency only furthers their marginalization, the lack of accessible space for party meetings, inaccessible transport for campaigning or an
Attitudinal barrier among voters and party leaders can be termed as contributing factors. Thus, we seldom see disability being highlighted in the manifestos of party. देखिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जो जातियां है ना, ये जो डिसेबिलिटी के लोग हैं उसकी वोट की वैल्यू नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी लोगों को साइड में रख देते, ठीक है, ज्यादा एक्सेस देते भी नहीं, ठीक है। सो बाय दिस आवर 40 मिनट्स ऑफ सेशन विल एंड। सेशन खत्म होता, प्लीज लॉग इन अगेन, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अपने पास क्या है, डेटा नहीं है अपने पास, एक्चुअली वी डू नॉट हैव एनी डेटा। आपके एरिया में कितने डिसेबल है मालूम है आपको? इन योर एरिया हाउ मेनी पीपल आर डिसेबल? वी डू अपने कुछ डेटा ही नहीं है अपने पास, अपन कुछ डेटा ही नहीं रखे, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर डेटा ही नहीं रखे तो लोगों को प्लान कैसा करते आप? समझ में आ रहा? ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन हियर।